guys, my name is Sagar. Welcome to my channel Data Driven Dive. So आप सभी को पता है कि पावर क्वेरी का कोर्स हमारा चल रहा है जो कि एंड होने वाला है। एक या दो लेक्चर बच रहे हैं, उसके बाद पावर क्वेरी का कोर्स हमारा एंड हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पावर क्वेरी के अंदर कि अगर मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास सेम हैं तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, दो शीट्स को, दो टेबल्स को। तो वो हमने लास्ट क्लास में करा था। तो आज हम बहुत ही एक यूनिक चीज़ करने वाले हैं पावर बीआई में, जो चीज़ हम पिवट टेबल्स, फिल्टर्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट हम पावर क्वेरी की हेल्प से उसको करेंगे। तो आप देखिए, ये मेरे पास डेटा है जिसमें रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, एक शिपिंग कंपनी का डेटा है और इसमें वी हैव 23 कॉलम्स। ओके, एंड वी हैव हाउ मच ऑफ रोज, यू कैन सी 9,994 number of rows, 9,995 number of rows, but data only in 9,994, one row is for header. So you can see there are too much of rows, nearby 10,000 of rows, and we want to summarize it into a short form. So what is our objective? We don't want all the columns, we need these columns only. We want these columns. Order date, we don't want the same order date. We want first of that particular month. Like if the order date is here 8/11/2016, so we want first, we want 1/11/2016, first of that particular month. So we can do it by using power query. Then we want ship mode, customer name, segment, category, sales quantity, and profit. So let's see, let's do it. So first I will open a new Excel file, because we'll do all the things in new Excel file, not in the same Excel file. So I'll open it and we will close the another Excel file, because if we work on it, so it will not work. So then after closing you can work on it. Data, then get data from file, from Excel workbook. Then we have to give the location of that workbook, where that workbook is located in our system. So I think it is here on desktop, power query, and click on that. It will take some time to load because there are so much of rows and so much of columns. So yeah, it is here, orders, and sheet one is our objective, and orders is this. And now we can click on orders and go to transform data. So when we click on transform data, it will evaluate it, and power query editor window is opening. Okay, so it is open. We have row id, order date, ship date. So first word in your mind, आपके दिमाग में फर्स्ट वर्ड ये आएगा कि चलो कॉलम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बट कॉलम डिलीट करने से काम नहीं चलेगा. वी वांट टू समराइज द डेटा, वी डोंट वांट टू delete the columns. If we want to delete the columns, so we can do the same thing in Excel also. Okay, so what we can do, in the transform tab you have the option of group by. So before that we will convert this order date to first of that particular month. So click on this column, go to date column, and you can see here you have start of the month. In the month you have start of the month. So you can see all the dates are converted into start of that particular one, 1/11, 1/11, 1/6, 1/10. Okay, now go to group by, and under group by option go to advanced, and you can select multiple columns here. So add grouping, click on that. So here we will use we will add text column. Here we will add some numeric columns. So what numeric columns we have? Numeric columns, we have sales. We want some summation of sales, and on the basis of our where sales. Then we want quantity, we want sum of quantity, and we want on the basis of quantity. And then we want profits of sum of profit, and on the basis of profit. And here first I want order date, then I want customer name, then I want customer segment, then I want their category, then I want one more thing I want, that is that can be ship mode. Okay, and it is done.
order date, customer name, segment, category, ship mode, and sales quantity and profit. We want all these, and click on OK. The moment you clicked on OK, you can see the columns are less. Order date we have, then we have customer name, then we have segment, category, ship mode, sales quantity, and profit. Now we can change the data types. We can check that if data type is correct. It is of date type, it is of text, it is of text. This is also text. This is decimal, decimal, and decimal. Now we can close and load it to Excel file. Close and load. Data is loading, and now we can see how many rows there are. You can see the data is reduced to 6928 rows from 10,000 rows. 9994 rows, it reduced to 6928 rows. And you can see here order date, then customer name, segment, category, ship mode, sales quantity, and profit. All columns are here that we want, and all the data we have. So in that way, we can summarize the data using the Power Query group by function. So it is a very powerful function. If you do this in Excel, so you have to do it by creating pivot tables or by applying advanced filters. So okay, so if you want to do it quickly, but don't want to create pivot tables, so you can use Power Query. By just single click, you can do that. Okay, so आज के लिए इतना ही. अगर आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें. पावर क्वेरी का ये हमारा 18th लेक्चर है. इसके बाद 2 लेक्चर और बचे हैं, या 1 लेक्चर आई थिंक, और उसमें पावर क्वेरी हमारा फिनिश हो जाएगा. एंड उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे. एक्सेल के हम 3 लेक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी. उसके बाद हम एक्सेल के लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो एक्सेल की प्लेलिस्ट भी है. पावर बीआई भी हम सेपरेटली चलाएंगे. एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई चलेगा. एक दिन एक्सेल, एक दिन पावर बीआई, इस तरीके से हम लोग करेंगे. तो आप एक्सेल और पावर बीआई भी सीखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ यूट्यूब चैनल पर मिलेगा. जस्ट आप यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए. आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.